Hello viewers, I am Jagannath and you are watching my channel Jagannath Technical Classes. So my dears, in our previous lecture video, we completed the introduction part and where I am discussed what is the strain, what is stiffness and what is the stress. So today in this video program, we will be start a new topic and that is the simple stress and strain. So my dear student, in our previous class we already discussed now what is the stress. Again I will be revise that topic dears, okay? Then what is stress? Stress is the ratio of internal resistance per unit area under the application of load. And always remember dear, the area includes in this formula is what? The cross sectional area. तो आम जो एरिया स्ट्रेस डेफिनेशन रे पुट करुचे तो सेटा हला को एरिया ना छुआ माने सेटा होचे तुमरा क्रॉस सेक्शनल एरिया ठीक. देन व्हाट इज क्रॉस सेक्शन हियर? क्रॉस सेक्शन मीन्स ए सेक्शन ऑफ समथिंग दैट हैज बीन कट डाउन इन द मिडिल टू शोन व्हाट इज इनसाइड. तो छुआ माने क्रॉस सेक्शन हला कौन ना आमे किछि सॉइल को मिडिल पार्ट रु काटिबा जेमिति कि आमे जानि परिबा सेही सॉलिड भितरे कौन अछि. तो सपोज गोटे एग्जांपल नेली वी आर कट ए सिलिंडर्स इनटू टू हाफ टू शो व्हाट इज इनसाइड्स. ओके, तो आउ कौन जानिथिले ना द यूनिट ऑफ स्ट्रेस इज द न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. इट शुड बी आल्सो कॉल्ड व्हाट द पास्कल एंड मेगा पास्कल जिगा पास्कल एमती किछि यूनिट आमे जानिथिले. ओके, आउ लास्ट को देखिथिले कौन ना तांको भितरे किछि यूनिट कन्वर्सन. देन जानिथिले कौन ना स्ट्रेस इज ए व्हिच क्वांटिटी ना स्ट्रेस इज ए टेंसर क्वांटिटी. ओके, देन कम टू द न्यू टॉपिक देयर एंड दैट इज द टाइप्स ऑफ स्ट्रेस. देन स्ट्रेस इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. वन इज द नॉर्मल स्ट्रेस एंड अनदर इज द टेंजेंशियल स्ट्रेस और शियर स्ट्रेस. तो स्टूडेंट एठी मु बेंडिंग स्ट्रेस आउ टॉर्सनल स्ट्रेस एक्सप्लेन करूनी कौन पाइना तो सेटा हला इनडायरेक्ट स्ट्रेस. बट एठी मु जो नॉर्मल स्ट्रेस आउ शियर स्ट्रेस भितर कहूची तो सेटा हला तमर कौन ना डायरेक्ट स्ट्रेस. सो माय डियर्स, व्हेन वी आर स्टडी द शियर फोर्स एंड बेंडिंग मोमेंट where I express or explain about the both bending stress and torsional stress. Okay, then come to the normal stress. The stress arises due to the force applied normal to the cross section of the body is known as what? The normal stress. ओके, तो फोर्स टा केमती एक्ट करिवो छुआ माने कह ना नॉर्मली एक्ट करिवो कोठी ना क्रॉस सेक्शन रे. आउ क्रॉस सेक्शन को पार्ट को कहा जाए ना सेटा मु आगरो डिस्कशन करि सारछि ठीक. अगेन द नॉर्मल स्ट्रेस is divided into two types. One is the tensile stress and another is the compressive stress. Okay, then come to the first normal stress and that is the tensile stress. Then what is tensile stress here? Now we are already know the stress arises due to the applied force, but here we have to define what the tensile stress. So the stress arises due to the tensile force is known as what? The tensile stress. Then what is the tensile force here? If the applied force have a tendency to increase the length of the body, then this force is known as what? The tensile force. And finally, the stress arises due to this tensile force is known as what? Na tensile stress. Okay. Again it is denoted by what? ना सिग्मा टी ठीक. तो आम जाने स्ट्रेस रो सिंबल होची कौन छुआ माने ना सिग्मा रे नौचु. तो एटी फॉर टेंसाइल स्मॉल टी कौन कर देली ना तले दे देली हैला. एंड आल्सो इट इज डिफाइंड एज व्हाट? द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस अराइज ड्यू टू द टेंसाइल फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. कौन पे छुआ माने ना मैं स्ट्रेस जानचे कौन ना स्ट्रेस इज द इंटरनल रेजिस्टेंस पर क्रॉस सेक्शनल एरिया. तो ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस था जो बाहरला कौन पाई बाहरला ना टेंसाइल फोर्स वाला. तो छुआ मैंने से आम आउ गोटे डेफिनेशन क्रिएट करि परिबा कौन ना इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस अराइज ड्यू टू टेंसाइल फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया. Okay, and it has also the same unit as that of
स्ट्रेस स्ट्रेस रे हमें जहाँ जहाँ यूनिट छुआ मैंने कही तो यार भी सही यूनिट ए पास्कल मेगा पास्कल जिगा पास्कल व्हाट एवर ओके देन कम टू द सेकेंड टाइप ऑफ नॉर्मल स्ट्रेस एंड दैट इज द compressive stress. The stress arises due to the compressive force is known as what? Compressive stress. तो compressive force पाई जो stress create हो छुआ मैंने तो मु कहि परबी कौन that is the compressive stress. But what is the compressive force here? ना if the applied force decrease the length of the body जदि applied force टा कौन करथो छुआ ने कह ना तार लेंथ को डिक्रीज कहथबो तो मु ताको को फोर्स कहि परिबी डियर्स ना ताको मु compressive force कहि परिबी ठीक एंड फाइनली द स्ट्रेस अराइजेस ड्यू टू दैट compressive force is known as what? The compressive stress. Okay, again it is denoted by sigma c. तो सिग्मा पाई स्ट्रेस आउ जो सी देली सी फॉर compressive ओके एंड आउ किसी आम डिफाइन कर फॉर्मूला अनुसार कौन सा इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस अराइज ड्यू टू द compressive फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया इज नोन एज व्हाट? द compressive स्ट्रेस है ना नहीं छुआ मैंने तो आम जाने स्ट्रेस इक्वल टू व्हाट? द इंटरनल रेजिस्टेंस बट ये जो इंटरनल रेजिस्टेंस क्रिएट है कौन पाई ना compressive फोर्स पाई तो आम कहीपर कौन इट इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ इंटरनल रेजिस्टेंस अराइज ड्यू टू द compressive फोर्स टू द क्रॉस सेक्शनल एरिया ओके एंड इट हैज ऑल्सो सेम यूनिट एज दैट ऑफ टेंसाइल स्ट्रेस स्ट्रेस रे में जहाँ भी यूनिट पढ़ते ना एठी भी आम से यूनिट ही पढ़ा ठीक सो वी कवर द नॉर्मल स्ट्रेस if any doubt regarding this then please comment okay then come to the another type of stress and that is the shear stress or it should be also called as what? The tangential stress okay then what is shear stress here? Now the stress arise due to the shear force is known as what? The shear stress. Then what is the shear force here? It is the force applied tangentially or parallel to the cross section of the body. तो एठी माय डियर स्टूडेंट्स फोर्सटा क्रॉस सेक्शन रे एक्ट न होइकी कोठी हेबो ना पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन सरफेस रे हुए ओके तो आई एम टेकिंग ए एग्जांपल हियर आई एम पुटिंग ए shear force एट द टेंजेंशियल सेक्शन ऑफ द क्रॉस सेक्शन माने क्रॉस सेक्शन रो टेंजेंट पॉइंट माने मु डायरेक्ट कहि परबी कोन ना पैरेलल टू द क्रॉस सेक्शन पॉइंट रे देन इट गेट tendency to deform some extent but any angularly तो किसी एंगल वाइज छुआ मैंने कौन हो ना ये डिफॉर्म हम बट जोटा आम आग केस देखुले टेंसाइल रे कंप्रेशन रे कौन होता छुआ मैंने कह ना तार लेंथटा इनक्रीज आउ डिक्रीज होता बट ये सेमती हबार चांस ना ओके सो ऑलवेज रिमेंबर डियर where I am putting a shear force that it cannot increase and decrease the length of the body but it deform to some extent angularly okay and it is denoted by tau and it is also defined as the ratio of internal resistance arises due to the shear force to the cross sectional area is known as what? The shear stress and here the force applied is the shear force okay again I am taking an example when two planes joined through a nut bolt जदि आम जॉइन करवा एंड पुल द प्लेट्स टुवर्ड्स द ऑपोजिट साइड्स देन द shear stress is developed in between the two plates ओके तो सेटा छुआ मैंने क्रॉस सेक्शन रे नाही कोठी हेबो ना इन बिटवीन द टू प्लेन रे देखा जीवो ठीक बुझिला तो एठी आउ केते जन को बुझा पड़ नथिबो तो आउ किछि एग्जांपल नेबा तो जेते बेले पिला माने 100 रे गाड़ी दौड़ुथिबे तो जदि ब्रेक मारुचे तो रोड आउ तुम गाड़ी टायर भितरे को फोर्स एक्टिंग होची तो सेठी कौन टेंसाइल के compressive फोर्स एक्टिंग होछ बोली भाबुछ कि ना ब्रेक मारला बेले रोड को सेठी तुम पिटुछ कि जाई कि पिटुछ माने कौन ना compressive दउछ रोड को तो सेमती कि भाबुछ कि नाइ ताहले कौन होची छुआ माने को ना टायर रो सरफेस आउ रोड सरफेस घसी है कि गाड़ीटा रही जाउची and that force is known as कौन छुआ मैंने को ना shear force and the stress arises due to the shear force is known as what? The shear stress. So remember dear when a moving vehicle start or stop there will be force acting and that is nothing about called as what? The shear force.
तो ये लगुच पिला माने बुझी जाइए बट झील मैंने रहीगले ये तो तांको भी किसी आम एग्जाम्पल जीवा है तो झील मैंने बेसी मेकअप नियंती सॉरी यहाँ मु कहूनी दुनिया कहूँ हौ जदि भी मेकअप नौन तो केबे तो किसी फेस वाश कि फेस क्रीम माखी तो सेटा तो कॉमन यूज ना तो मते छुआ मैंने कह ये जो क्रीम आम माखी थाऊ तो सेठी को फोर्स एप्लाइड कर थाऊ तो मुह को तुम पिटुल कि सेठी ना घसीकी मालिश कर तो सेटा छुआ मैंने इमेजिन कर ना आमे कौन करुचे ना हाथ को मुह उपरे घसीकी कौन करुचे कह ना फेस वाश हो कि क्रीम हो ताको कौन करुचे ना लगे थाऊ ना सेटा भी गोटे आम एग्जाम्पल कहार नहीं पारिबा ना सियरी फोर्स जदि गाल को तुम से पिटुच मुझे कहीपरि से कंप्रेसिव फोर्स तुम लगाऊच बट एमती पिटी पिटी किए क्रीम लगे कौन करती ना तुम सरफेस रे गालर सरफेस और हाथ को कौन करती ना घसी घसी मालिश करके क्रीम लगे था तो छुआ मैंने सेटा भी प्रॉपर एग्जांपल हो पार ना कौन ना एप्लाइंग फेस क्रीम इज ए प्रॉपर एग्जांपल ऑफ शियर फोर्स ओके तो ये बहुत किसी एग्जांपल नहीं पारिबा छुआ मैंने तो पिला झील सब एग्जांपल सब गला तो ये किसी इंजीनियरिंग तरफ रू नवा ना व्हेन वाटर फ्लोस रिवर बेड it is also example of what the shear force there okay and due to when water flows through the river a force arises in between the water and the bed of the river and that is known as what the tensile की compressive बोली भावुच कि नाई सेटा होची तमरा को फोर्स हुआ माने ना that is known as the shear force in nature ओके तो मु भावुची एठी किछि shear force रे क्लियर हो जाइतबो जदि किछि डाउट रहउछि तो मते प्लीज कमेंट करो ओके Then come to the next important topic of strain the material and that is the strain ठीक तो आम ऑलरेडी स्ट्रेस सब सार देले कौन ना टाइप्स ऑफ स्ट्रेस सब सार देले दैट इज द टेंसाइल स्ट्रेस सारे कंप्रेसिव स्ट्रेस सारे फाइनली कौन सारे छुआ मैंने कह ना शियर स्ट्रेस तो स्ट्रेस काम गला एवं कौटिके पलि आसवा ना स्ट्रेन को पलि आसवा ठीक तो आम स्ट्रेंथ कहूनी स्ट्रेंथ अलग और स्ट्रेन अलग ठीक स्ट्रेन इज अ डिफॉर्मेशन ओके देन व्हाट इज स्ट्रेन हियर ना strain is defined as the ratio of change in dimension to its original dimension under the application of load. Suppose I am taking an example when the body is subjected to some loading then it gets deformed. The change in dimension mean the difference between the final dimension and the initial dimension. Then what is strain? Now strain is defined as the ratio of change in dimension to its original dimension under the application of load. Okay, suppose I am taking an example when a body is subjected to some loading then it get deformed. Then here the change in dimension means the difference between the final dimension and what the initial dimension. So finally this change in dimension to its original dimension is known as what the strain okay and it is denoted by तुम स्मॉल ई रे भी डिनोट कर आउ एप्साइलम कौन ना एप्साइलम यूज कर तो मु सजेसन देवी छुआ मैंने ना तुम स्मॉल ई रे ही यूज कर कौन पाई ना एप्साइलम को जदि आम कैपिटल ई रे लिखिदेबा तो प्रॉब्लम हो कौन पाई ना आग को आम पढ़ा ना मॉड्यूलस ऑफ इलास्टिसिटी रा सिंबल कौन ना कैपिटल ई है आउ जोटा कि फास्ट यूज होची कौन ना तुम स्ट्रेन द मटेरियल तो से स्ट्रेन तुम एप्साइलम यूज करवा दरकार नहीं कौन यूज कर छुआ मैंने ना स्मॉल ई ओके एंड हियर ए इम्पोर्टेंट नोट ऑलवेज रिमेंबर डियर ना इट हैज नो यूनिट दैट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी because it is a ratio of some quantity देख ऊपर रहा भी डायमेंशन तले रहा भी डायमेंशन तो आम डायमेंशन बाय डायमेंशन कौन होगा ना यूनिटी होगा तो आम कहीपर कौन इट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी ओके देन कम टू द टाइप्स ऑफ स्ट्रेन ये किसी टाइप्स ऑफ स्ट्रेन बाबद में पढ़ा ठीक स्ट्रेन इज ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स वन इज द नॉर्मल स्ट्रेन सेकेंड वन इज द शियर स्ट्रेन एंड थर्ड वन इज द वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन but here is a important note always remember dear now in this type of normal strain and shear strains are the lengthwise change but volumetric strain is the volume wise change in dimension okay तो छुआ मैंने ये जो आम नॉर्मल स्ट्रेन और shear strain पढ़ा यहाँ हूँ लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन बट जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन पढ़ा तो सेटा हूँ कौन छुआ मैंने कह ना वॉल्यूम वाइज
चेंजिंग और वॉल्यूम वाइज चेंजिंग डायमेंशन ओके तो को बुक रे देखिए ना सेठी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन को सेपरेट करके निया जाउ थाए बट मु एथिरे कोन करछि ना ऐड करके क्लासिफिकेशन रे नउछि कोन पई हमें डिटेल किछि जानि परिबा ठीक से यार डिफरेंस फल से जानि परिबा ठीक बाकी एतिके मन रखिबो छुआ माने ना जो नॉर्मल स्ट्रेन आउ कोन को ए जो हमर शियर स्ट्रेन होछि कोन ना लेंथ वाइज डिफॉर्मेशन लेंथ रे डिफॉर्मेशन पई हेतै बट ए जो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन टा केमति हेतै ना वॉल्यूम वाइज डिफॉर्मेशन पई हेतै तो एटा छुआ माने मन रखिबो हला देन कम टू द फर्स्ट वन एंड दैट इज द नॉर्मल स्ट्रेन normal strain it is the strain arise due to the force applied normal to the cross section तो छुआ माने क्रॉस सेक्शन रे फोर्स अप्लाइड परे जो डिफॉर्मेशन देखुचे तो ताकू आमे कहबा कोन ना नॉर्मल स्ट्रेन ओके अगेन द नॉर्मल स्ट्रेन इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स वन इज द टेंसाइल स्ट्रेन एंड अनदर इज द कंप्रेसिव स्ट्रेन ओके then come to the first one and that is what the tensile strain the tensile strain means what the strain arises due to the tensile force is known as what the tensile strain suppose I am taking an example here in a body I am providing the tensile force and because of the tensile force the length of the body will be increases and here mark dear the original length of the body is L and the body will deform under loading to increase some extent suppose del L1 and del L2 and here the change in dimension is the change in length and that is equal to del L1 plus del L2 and that is equal to what the final suppose del L so finally the tensile strain is the change in length to its original length but अंडर द एप्लीकेशन ऑफ टेंसाइल फोर्स तो टेंसाइल फोर्स पाई जो आम चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ करुचे तो सही रेशियो को आम कहबा कौन छुआ मैंने कह ना टेंसाइल स्ट्रेन ओके देन इट इज डिनोटेड बाय आम जाने स्ट्रेनटा कौ डिनोटेड करचे ना ई रे तो जेहेतु टेंसाइल स्ट्रेन तो ई तले कौन मार्जिन करदे ना टी मार्जिन करदे तो इट इज डिनोटेड बाय ई टी एंड इट इज ऑल्सो ए यूनिटलेस क्वांटिटी कौन पाई छुआ मैंने कह ना चेंज इन लेंथ टू द ओरिजिनल लेंथ तो लेंथ रो यूनिट जहाँ तुम चेंज इन लेंथ रो भी यूनिट था तो यूनिट कटिगला फाइनली रहा कौन ना यूनिटी ठीक तो इट इज ऑल्सो ए कौन ना यूनिटलेस क्वांटिटी सो हियर इज ए इम्पोर्टेंट नोट ऑलवेज रिमेंबर डियर that due to the tensile force the length of the body will be increases so the change in length that is the difference between final length and initial length is become positive तो छुआ मैंने जो आम टेंसाइल फोर्स दूसरी तो बॉडी रो लेंथटा कौन होची कह ना इनक्रीज होची तो से जो चेंज इन लेंथटा जो पाइले कौन ना फाइनल माइनस इनिशियल करिकी तो से निश्चय भाव में कौन हम ना पॉजिटिव वैल्यू ही नब सो दैट द टेंसाइल स्ट्रेन टेक द पॉजिटिव साइन तो टेंसाइल स्ट्रेस को छुआ मैंने स्ट्रेन को कौन नबा आम सब ना पॉजिटिव साइन नबा ठीक then come to the another types of normal strain and that is what the compressive strain compressive strain it is the strain arise due to the compressive forces or compressive stresses तो compressive stresses पाई जो strain देखा दउची बॉडी रे से डिफॉर्मेशन को हमें कहबा कौन ना compressive strain suppose I am again taking an example here now in a body I am providing the compressive force and because of the compressive force the length of the body will be decreases and here marked here now the original length of the body is L and the body will deform under loading to decrease some extent due to the compressive force suppose del L1 au kon na del L2 so finally the compressive strain means what it is the ratio of the change in length to its original length is known as what the compressive strain ओके आउ मन रखिबो अंडर द सब ऐड करथबो डेफिनेशन रे कोन अंडर द एप्लीकेशन ऑफ कंप्रेसिव लोड बा कंप्रेसिव फोर्स ओके देन अगेन इट इज नोटेड बाय EC फॉर कोन ना कंप्रेसिव फोर्स ओके देन इट हैज आल्सो नो यूनिट दैट इज ए यूनिटलेस क्वांटिटी ओके सो हियर आल्सो इंपॉर्टेंट नोट ना ड्यू टू द compressive force the changing length and that is the what
the difference between final and initial length is taken as what? The negative. छुआ मैंने जिते मु कंप्रेसिव फोर्सटा एक्ट करुँची लोड दूची तो से कौन हो ना बॉडी लेंथटा डिक्रीज होची तो जो डिक्रीज होगी अच्छी तो सहीटा हूँ कौन तुम फाइनाल डायमेंशन बट आगुरी जो लेंथटा बेसी होगी अच्छी से कौन ना इनिशियल डायमेंशन तो मत छुआ मैंने कह जो मुझे फाइनाल डायमेंशन रु इनिशियल डायमेंशन करी कौन ना कंप्रेसिव स्ट्रेन रे तो मत पॉजिटिव वैल्यू मिल ना नेगेटिव वैल्यू मिल ना निश्चय भाव में नेगेटिव वैल्यू मिल तो ये कह ना से जो चेंज इन लेंथ आम पाइबे कौ साइन निब ना नेगेटिव साइन एंड बिकज ऑफ द दिस फॉर कंप्रेसिव स्ट्रेन वी टेक द नेगेटिव साइन ऑलवेज सब बेले कौन नवा कंप्रेसिव स्ट्रेन रे ना नेगेटिव साइन नवा ठीक so we are completed the normal strain that is what the tensile strain and the compressive strain then come to the shear strain or tangential strain okay shear strain it is the strain arise due to the force applied tangentially to the cross section it means force applied parallel to the cross section let's know the fact of shear strain suppose I am taking a block suppose ABCD and putting a shear force that is the force applied parallel to the cross section or in tangent point of cross section तो सपोज मु shear force applied करी को पॉइंट रे ना बी पॉइंट रे कौन पाई ना ए बी है कौन ABCD ब्लॉक रो क्रॉस सेक्शन आउ BC है कौन ना टेंजेंट साइड ठीक कहार ना AB रो तो मु कोठी shear force पकेबी ना पॉइंट बी रे ठीक and finally now due to the shear force at B the cross section side AB cannot increase or decrease तो जदि आम पॉइंट छुआ मैंने बी पॉइंट जदि आम फोर्स पकेबा कौ फोर्स ना shear force सेठी AB साइडटा इनक्रीज हेबनी कि डिक्रीज हेबनी कौन पाई कह ना एठी आम कोठी पकईने फोर्स ना आम क्रॉस सेक्शन रे एठी आम फोर्स पकईने बा पकई नाही okay so dears due to the shear force AB side will be extend angularly AB to AB dex तो छुआ मैंने कौन है ये जो आमर ड्यू टू द shear force कौन है जो AB साइडटा थिला क्रॉस सेक्शन साइडटा जस्ट खाली से कौन है डिफॉर्म होला केमती डिफॉर्म होला ना एंगुलरली डिफॉर्म होला केमती ना AB to AB dex को okay then we said that directly the shear force convert the block ABCD into A, B dex, C dex, D. And here marked here there is a angular deformation occur and that angular deformation is known as the shear strain. बुझीला मु कौन कहूँ ना so shear strain is a angular deformation of a body due to the shear force. तो सब मन रखियो छुआ मैंने shear strain टा होची कौन ना गोटे angular deformation of a body due to the shear force. and it is denoted by phi कौन दबा कह या रिप्रेजेंट करवा phi रे ओके तो आम ए phi को कौन करवा ना मेजरमेंट करने आम को रूलटा अप्लाई करवा ना पाइथागोरस रूलटा अप्लाई करवा तो हमको नोन साइडटा कौन जना अच्छी ना AB आउ BB डेक्स AB है कौन ना क्रॉस सेक्शनल साइड आउ BB डेक्स है कौन ना केते डिफॉर्म होती B रु B डेक्स को ओके तो फाइनली आम 10 phi पकईदे 10 phi इक्वल टू कौन हो छुआ मैंने कह ना BB डेक्स बाय AB एंड फाइनली phi इक्वल टू कौन लिखिदेवा ना AB डेक्स सॉरी BB डेक्स बाय AB ये BB डेक्स बाय AB कौन पाई 10 छाड़देले ना 10 phi नियरली इक्वल टू phi आउ मैं नहीं पारिबा कौन ना इट इज ए वेरी स्मॉल एंगल से 10 एथरे कौन कले ना आम नेग्लेक्ट करदेले ठीक तो आम फाइनली कही पारिबा कौन ना छुआ मैंने द डिस्टर्शन बिटवीन two mutually perpendicular plane in radian is known as what the shear strain okay so here also important note always remember dear that due to the radians is a ratio therefore shear strain is also a what the unitless quantity or it has no any unit okay then come to the next type of strain and that is the volumetric strain so volumetric strain is defined as the ratio of change in volume to its original volume when a body subjected to different modes of stress and finally mathematically it is represented as EV कौन पाई ना या सिम्बॉलिकली निया जाए कौन ना EV E for strain V for volumetric तो EV इक्वल टू चेंज इन वॉल्यूम को आम नौचे del V by V
and it is also a what, a unitless quantity because of the volume wise ratio. Okay, so dears, today we are discuss what, the stress, strain, and their various types. So please do like, share, comment, and never forget to subscribe our channel for latest update. Keep watching. Thank you.